Hello students, today we will discuss very important chapter, that is indefinite integration. This chapter is very big but very interesting. Let's start indefinite integration. In previous standard, that is in 11th standard, you have studied fundamental rules of integration. Suppose f of x and g of x are any two functions. Suppose f of x and g of x are any two functions in terms of x, then integration of f of x plus g of x is equal to integration of f of x, that is integration of first function, plus integration of second function, means it is integration of g of x. Okay, means taking separate integration here. Integration of first function plus second function is nothing but integration of first function plus integration of second function. This theorem can be extended to integral of sum of more than two function. Means suppose integration of f1x or f1 plus f2 plus f3 up to fn, means integration of sum of n function is equal to integration of first function plus integration of second function plus integration of f3, that is third function, up to integration of n function, that's it, where f1, f2, f3, fn are the functions in terms of x. So, it is very simple formula, that is integration of sum of n function is equal to sum of nth integration, that is taking separate integration. If it is minus, that is integration of f1 minus f2 minus f3 minus f4 and so on, that is minus fn, then here the result will be integration of f1 minus integration of f2 minus integration of f3 and so on up to n terms. It is very simple. That is, these rules are called as addition as well as subtraction rule. Okay, means taking separate integration here, that's it. Now formula number third, standard formula number third, here only statements here, that is integration of k times f of x is equal to k into integration of f of x dx, where k is constant and f of x is any function of x. For example, integration of 3 times sin x, x is the variable, sin x is function, trigonometric function, and 3 is constant number. This one I can write in this way, 3 you have to write outside the integration operator, that is 3 into integration of sin x dx. Suppose integration of 9x square dx, x square is standard form and 9 is constant, so you have to write 9 outside to integration operator, that is 9 into integration of x square dx, that's it. Now you have to apply here standard formula of integration, that is x raised to n formulas. You have to simplify that, you will get final answer. Means here you must remember, that is integration of sum of two functions or more than two functions. Similarly, integration of difference of two functions or more than two functions, difference of more than two functions, and as well as scalar multiplication. The next exercise is based on this fundamental rule as well as basic formulas of trigonometric functions as well as algebraic function. Let us start exercise 3.1. Question number 1, evaluate integration of x cube plus x square minus x plus 1 with respect to x. Solution, let I is equal to given integration, or you can take as it is, that is as integration of x cube plus x square minus x plus 1. Now you have to observe this. See here, the integration of sum or difference of functions. See here there are four functions, x cube, x square, x and 1.
Okay, and it's a very simple form. So how to integrate this? It's very easy. You have to take separate integration. By taking separate integration, you will get integration of x cube plus integration of x square minus integration of x plus integration of 1 dx, or you can say integration of dx only. And this is nothing but, how to integrate this? Means each and every term is standard form here. So you have to apply standard formula. This one is depends on integration of x raised to n. You are familiar with this. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले इसके पहले जो वीडियो इसमें हमने पूरा कवर किया है 46 स्टैंडर्ड एज वेल एज जनरल फॉर्मूले, उसमें पार्ट 1 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन में कवर कर चुके हैं. तो आप वो फॉर्मूले वो वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्मूले. उसमें बहुत अच्छे से लिया है. वेरिएबल रेज टू नंबर मीन्स बेस पावर फॉर्म, वाई नॉट टेक फंक्शन रेज टू नंबर, एफ ऑफ एक्स रेज टू नंबर, वो सभी इन डिटेल में उसमें समझाया है. नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स. अब यहाँ पर देखिए एक्स मीन्स वेरिएबल रेज टू नंबर है. सो हियर यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज एक्स रेज टू n plus 1 upon n plus 1 plus c. Okay, plus c. So here the power is 3, then its result will be, that is nothing but x raised to 4 upon 4 plus x cube upon 3 minus x square upon 2 plus x plus c. That's it. This is final answer. Okay, we cannot simplify this one. Okay, अगर उसे सिंप्लीफाई कर सकते तो सिंप्लीफाई स्टेप लिखना है, अदरवाइज keep as it is. Now question number 2 from your textbook. Evaluate x square into bracket 1 minus 2 upon x the whole square. Solution, the given integration in this form. Now you have to observe this, it is a multiplication of two function, but don't apply u into v formula here, because of here x square into this is also algebraic, means product of two algebraic function. So that's why you have to expand this one by using a minus b the whole square formula. Then you have to open that. That is nothing but integration of is equal to integration of x square, keep as it is. Here you have to apply formula, that is by a minus b the whole square formula, that is nothing but 1 square is 1 minus 2 into first term into second term, that is minus 4 upon x plus 4 upon x square. Again you have to open the bracket. Okay, you have to open this bracket, that is nothing but, see here x square into 1, it is nothing but x square, then x square into minus 4 upon x, 1x get cancelled, that is minus 4 into x, that is minus 4x. Again here x square into this one means x square into 4 upon x square, here x square get cancelled, that is 4 only. Okay, and this is a very simple form, that is nothing but sum or difference of three functions. Okay, how to integrate this? By taking separate integration, that is integration of x square minus 4, you have to write outside the integration operator, that is minus 4 into integration of x dx plus 4 into integration of 1 dx. Or you can say that integration of x square dx minus 4 into integration of x dx, simply you have to mention integration of x square. But in case of writing, you must write dx here. Okay, you must write dx. Dx is very important here because of it mentioned variable. Okay, so by using standard formula, it become x cube upon 3 minus 4x x square upon 2 plus 4x plus c. Again here 2 get cancelled here. The simplified step is x cube upon 3 minus 2x square plus 4x plus c. That's it. Okay, it's very simple. Now similar type of question for practice, here integration of 3 by 2 minus 5 upon x square the whole square, bracket ratio 2. You have to expand this and taking separate integration, that's it. It's very simple. One more question, that is integration of 5 plus 2x the whole cube. You have to expand by using a plus b the whole cube formula. Then question number 5, x square into bracket 1 by x plus x by 2 the whole square. Again you have to expand this one, this second bracket you have to expand by using a plus b the whole square formula, then open with x square, then you will get simple form. Now next one, question number 6 from your textbook. Evaluate integration of 3 sec square x minus 4 upon x plus 1 upon x root x minus 7 into dx. Its solution.
as the given integration this one. See here, sec square is standard form, means it is integrable. What is integration of sec square x? Tan x. Here 1 upon x, you have to write for outside, integration of 1 upon x dx or dx upon x, that is log. 7 is also standard, means 7 you have to write minus 7 outside, integration of 1 dx. These are standard, but you have to observe this one. Okay, you have to observe this form, that is integration of 1 upon x into under root x. This is not standard form. So reduce this term, this function to standard form. Okay, you know x, see 1 upon x into root x is equal to 1 upon x. What is under root x? X raised to half. Okay, x means x raised to 1. Then by laws of indices, it become 1 upon x raised to 1 plus half. Okay, now you have to find out its addition, that is 1 plus half is nothing but 3 by 2, that is 1 upon x raised to 3 by 2. Okay, 1 upon x raised to 3 by 2, and this one you have to convert in numerator form, it become x raised to minus 3 by 2. So this factor you will get in standard form. After applying laws of indices, after simplifying, you will get x raised to minus 3 by 2. Then here you have to apply x raised to n formula. That's it. Okay, it's very simple. You have to write directly, that is taking separate integration, or first you have to simplify that. What is the 1 upon x into root x, that is nothing but x raised to minus 3 by 2. You have to write direct value here. Okay, which because of this one is very simple, that is which is based on 7th standard result or 5th standard. Okay, so you have to write this one. Now taking separate integration, that is 3 into integration of sec square x dx minus 4 into integration of dx upon x or 1 upon x into dx plus integration of x raised to minus 3 by 2 minus 7 into integration of 1 dx, and all are in standard form. See, you can check it. This is standard, this is also standard, this one is also standard form. This one you have to simplify by using x raised to integration of x raised to n formula. This is also standard. Means each and every sum you have to convert in standard form. That's it. Okay, so its value become 3 into tan x minus 4 log x. Okay, sorry, here you have to put mod here, mod log x. Okay, then x raised to minus 3 by 2 plus 1 upon minus 3 by 2 plus 1 minus 7x plus c. Now you have to simplify this factor here, that is minus 3 by 2 plus 1. Okay, and that is nothing but 3 tan x minus 4 log mod x plus x raised to minus half upon minus half minus 7x, and that is nothing but you have to simplify that. Here mod is there, here also mod. Okay, that is 3 tan x minus 4 log mod x minus 2 into x raised to minus half. X raised to minus half means 1 upon x raised root x, or 1 upon x raised to half, that is root x minus 7 x minus 7x plus c, and this is final answer. It's a very simple form. Next one for practice, integration of 2x cube minus 5x plus 3 upon x plus 4 upon x raised to 5 with respect to x. See here, I want to show you, that is, see here, this one is standard. By taking separate integration, you will get integration of this one. Again x, integration of x is nothing but x square by 2. Here they show standard form, that is 3 times log mod x, and this is not in standard form. You have to convert in numerator, you have to reduce this in standard form, that is 4 into x raised to minus 5. Then you have to apply x raised to n formula. Okay, then you will get final answer. Okay, next one more question. Here integration of see 3x cube minus 2x plus 5 upon x root x. What is x root x? X root x is nothing but x time
root x is nothing but x raised to minus plus 3 by 2. Okay, so this integration you have to write in this way, that is integration of see x root x is nothing but x raised to 3 by 2, and that is nothing but my upon means minus 3 by 2 into bracket, see I want to show you, that is integration of, see integration of x raised to minus 3 by 2 into bracket 3x square minus 2x plus 5 with respect to x. That's it. Then you have to open this bracket. Okay, open with this one. It's very simple form. Now next part is next question, question number 9 from your textbook, that is integration of 3 upon, evaluate integration of 3 upon under root of 7x minus 2 minus under root of 7x minus 5 with respect to x. Solution: as or let I is equal to given integration. Now you have to observe the given integration. This is not in standard form. So you have to reduce this given integration in standard form. But you have to observe here. Here the denominator is irrational number. Okay. Denominator is irrational. So you have to rationalize denominator first. How to rationalize this? By multiplying and divide by conjugate of denominator. That is here dr means not doctor. Here denominator is irrational, hence first we rationalize denominator. How to rationalize? There is some method, multiply and divide by its conjugate. Conjugate means you have to multiply and divide by same factor, but instead of minus you have to write plus sign here. Okay. So here integration of 3 upon under root of 7x minus 2 minus under root of 7x minus 5 into under root of same factor, that is 7x minus 2 plus under root of 7x minus 5, same factor, numerator and denominator. Now here you have to observe this, suppose it is a, suppose this factor is suppose a and this consider as b. Okay, then you will get a minus b into a plus b form. Then by using a minus b into a plus b form, you will get a square minus b square, means taking square of this under root get removed. Okay, then after that it become integration of 3 into bracket, or you have to write outside this 3 into integration of 7 under root of 7x minus 2 plus under root of 7x plus 5. After squaring, that under root will remove. तो स्क्वेयर करने के बाद अंडर रूट रिमूव होता है, इट बिकम 7x माइनस 2 माइनस 7x माइनस 5. अभी यहाँ पर हमें ब्रैकेट ओपन करेंगे. नाउ यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस 5 अपॉन 7x minus 2 minus 7x, and here minus minus become plus 5. Now here 7x plus 7x and minus 7x get cancelled, that is minus 2 plus 5 how much, that is plus 3, again 3 so get cancelled, then it is nothing but integration of, see here this 3 also get cancelled, and it's very simple form, integration of f of x plus g of x form. So taking separate integration, okay, by taking separate integration it become raised to half. Okay, under root x, you know root x is nothing but half, means under root of 7x minus 2 is nothing but 7x raised to half. That is, I want to show you root x, see root x, under root x is nothing but x raised to half, so it become raised to half. By taking separate integration is nothing but by using ax plus b bracket raised to n formula is nothing but 7x minus 2 bracket raised to half plus 1 divided by half plus 1 into 3. What is half plus 1? 3 by 2. Directly you have to put the value here, that is 3 by 2. Half plus 1 means half plus 1 is nothing but 3 by 2. Directly you have to write here 3 by 2, here 7 into 3 by 2, this is also 3 by 2 upon 7 into 3 by 2. Now you have to simplify this.
Okay, that is nothing but 7 upon 7 into 3 by 2 is nothing but upon 21 by 2, and that is nothing but 2 upon 21, means 2 upon 21 into bracket 7x minus 2 bracket raised to 3 by 2 plus 2 upon 21, and this one, or taking 2 upon 21 is common, you will get final answer. But you remember, you have to write plus c at each and every integration, because of integration c is nothing but integration of constant. ओके और ये इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से स्टडी किया है. ओके आपको एक्सप्लेन कर चुके, व्हाई वी राइट प्लस सी. नाउ नेक्स्ट सम इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ओके यू हैव टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर फॉर ईच एंड एवरी सम हियर. ओके you can solve this one. Now question number 13 also same type, you have to rationalize denominator first. Now next one is question number 14 from your textbook. Now integration of e raised to 2 minus 5x plus 2 upon 6x plus 1 into dx. Solution. See again you have to observe this, it is nothing but, see you have to observe, it is nothing but, suppose f of x and g of x, sum of two functions, then how to integrate, by taking separate integration. Okay, integration of first plus integration of second, again you have to observe this one. See this is nothing but standard form integration of, you are familiar with integration of e raised to ax plus b form. What is integration of e raised to ax plus b form? That is e raised to ax plus b upon coefficient of x plus c. It's very simple. Okay, so and again it is, see you have to observe this one, second integration, this is also standard form. You are familiar with integration of dx upon or 1 upon ax plus b, that is nothing but log of ax plus b upon a plus c, that's it, right? So both are standard forms, so taking integration it become e raised to 2 minus 5x upon, what is the coefficient of x here, minus 5 upon minus 5 plus 2, you have to write outside the integrator operator, that is dx upon integration of dx upon 6x plus 1, and that is nothing but log of, you have to put mod here, log of 6x plus 1 upon coefficient of x 6 here plus c, and this is the final answer. Okay, or you can simplify this here, 2 to get cancelled, it become 3, and you again you have to write that step, and that is nothing but e raised to 2 minus 5x upon minus 5 plus log of 6x plus 1, 6x plus 1 upon 3 plus c, that's it. It's very simple form. Now next question, question number 15, integration of 9 minus x by 2 bracket raised to 8 plus 4x plus 5 bracket cube. Here don't expand this one, again you have to apply ax plus b bracket raised to n formula. It's very simple, that is nothing but by taking separate integration, then applying this formula, you will get 9 minus x by 2 bracket raised to 8 plus 1 is 9 upon 9 into minus half, what is the coefficient of x here, minus half, plus 4x plus 5 bracket raised to 3 plus 1, that is 4 upon 4 into 4, then again simplify this, you will get, this is last step. Okay, next one is for practice, just you have to taking separate integration, you have to simplify this by taking separate integration, then you have to apply integration of ax plus b bracket raised to n formula, you will get last answer. Now next one is question number 17, this type is very very important, integration of sin square x dx. Okay, solution sin square x, see there are 10 results, 10 standard formulas of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखे तो 10 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, एज वेल एज 10 ऑफ लीनियर एंगल के दिया था आपको, तो इतना डीप में नहीं जाते हम, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करते हैं. देखो इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स
अभी ट्रिग्नोमेट्री टाइप स्टार्ट हुआ करके थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो आपको आइडिया आ जाएगी इन्हें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा तो उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स, ये आपको बताया था, इसे डिराइव करना है। ओके, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, ये भी डेरिवेशन के लिए रखा है क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेटिव से नहीं आए, यानी इसका डेरिव प्रूव करना है हमें इसे। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये 6 हो गए। देन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, then integration of cosec x into cot x dx. Okay, we have these 10 formulas, but you have to observe here, see these are very fundamental rules. See sin x cos x, again we have tan x cot x sec x cosec x, and see these 6 are again, see you have to observe this in square standard form. In square, that is nothing but, see it's always sec square x. अगर स्क्वेयर में अगर देखेंगे आप तो sec square x एंड cosec square x ही है। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x और इंटीग्रेशन ऑफ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x, बाकी sin x cos x tan x है। अगर ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, इफ इट इज एनी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ sin square x, so you have to convert in linear form power 1, you have to convert in power 1. Here sin raised to 4x, again you have to convert in power 1, whatever may be the angle, angle कुछ भी रहने दो linear, but that should be linear, linear angle. Here देखो ये 6 फॉर्मूले हो गए, sin cos tan cot x sec x cosec x, अगेन स्क्वेयर में 2 ही फॉर्मूले हैं, sec square x and integration of cosec square x, and multiplication में sin sec x into tan x है and cosec x into cot x है। ये से मल्टीप्लिकेशन में साइन कॉस इस तरीके से नहीं है, तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ याद रखना है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पावर एनी आ गया है तो उससे लीनियर फॉर्म में करेंगे। ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इन लीनियर फॉर्म। अगेन वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, नॉट एफ ऑफ एक्स फॉर्म हियर, एंगल इज नॉट एनी एंगल, इट शुड बी लीनियर, एंगल शुड बी लीनियर ax plus b. Okay, so here you have to convert sin square in terms of linear form. So we have 1 minus cos 2x upon 2 is equal to sin square x. So substitute this value here, that is therefore the given integration sin square x dx is equal to integration of 1 minus cos 2x upon 2 into dx. So 1 upon 2 you have to write outside the integration operator, that is half into integration of 1 minus cos 2x. See here, just this square form you have to convert in linear. See, it is a linear, power is 1 here, and it's very simple. After taking separate integration, integration of 1 dx is known and integration of cos of something is also standard form. So taking separate integration, that is half into 1 dx, integration of 1 dx minus half into integration of cos of 2x into dx. So what is integration of dx or 1 dx? That is x, means half into x minus half into what is integration of cos positive, that is sin 2x upon 2 plus c. Okay, so taking half common or keep as it is here, so it become, see, it become x by 2 minus 1 by 2 into sin of 2x by 2 plus c, that's it, or taking 1 by 2 common or keep as it is. Okay, now next part is extra question, integration of sin square x dx, not sin square, previous was sin square x, here sin square 2x, sin square may be 4x, sin square may be 6x, anything is there. Okay, but that angle should be linear, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, लीनियर आने वाला है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इन 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 2 फॉर्म. ओके, इट्स वेरी सिंपल. नाउ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 3x, कॉस स्क्वायर में ये जो पावर 2 है इसे 1 करना है हमें बाय यूजिंग बेसिक मल्टीपल एंगल फॉर्म. सी ये जो पावर 2 है इसे 1 करना है. हाउ टू कन्वर्ट इन 1? वी नो दैट 1 प्लस कॉस 6x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos square 3x. So integration of cos square 3x is equal to integration of 1 plus cos 6x by 2. तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे आ गया. 1 upon 2 you have to write outside the integration operator, that is half into integration of 1 plus cos 6x, taking separate integration, that is half into integration of 1 dx plus half into integration of cos 6x, and this is the final answer. Okay, x by 2 plus 1 by 2 into sin of 6x by 6 plus c. That's it. Now extra questions, similar type of question ले लेते हैं. साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब में क्या करेंगे? साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. द पावर शुड बी लीनियर. ओके, पावर शुड बी लीनियर. साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन कॉस 3 थीटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. साइन रेस टू 4x, ओके, साइन रेस टू 4x, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम? साइन रेस टू 4x को लिखेंगे हम, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 4x means sin square x bracket square with respect to x. Again here what is sin square x? By previous form 1 minus cos 2x upon 2 the whole square into dx. Now taking separate integration, that is integration of means 1 upon 4 you have to write square of numerator upon square of denominator, that is 1 square 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2x, cos square 2x into dx. Again here see this is standard, this one is standard. Again here you have to simplify by using basic multiple angle formula. What is cos square 2x? Cos square 2x is nothing but 1 plus cos 4x upon 2, and by simplifying you will get standard result, standard integration. Okay, it's very simple form. Now next is integration of, evaluate integration of cos raised to 4x. Again you have to apply same procedure, that is cos square x the whole square. तो cos square x की वैल्यू लिखेंगे 1 plus cos 2x by 2 the whole square. Okay, here integration of sin raised to 4 of 2x, angle is 2x here but it should be linear. Then cos raised to 4 of 3x, you have to apply same procedure here. Now next sum is from your textbook, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो क्वेश्चन दिए आपको ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है. ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हो सकते हैं सॉल्व प्रॉब्लम है, आपके टेक्स्ट के सॉल्व क्वेश्चंस है उसमें, राइट. एक्स्ट्रा इसका मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो एक लाइन में आंसर आता है बाय एफ ऑफ एक्स रेज़ टू एन फॉर्मूला से, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में 3 मार्क्स की क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस करना है. अगर आप सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व में आ जाएगा. ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan square x. ओके, tan square x इज वेरी सिंपल. सी tan square x, अभी आपको जो 10 फॉर्मूला लिख कर दिए थे ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें 2 फॉर्मूले स्क्वायर में थे. ओके, कौन से फॉर्मूले स्क्वायर में? सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, बाकी किसी के लिए नहीं है. इफ इट इज एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर और क्यूब, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड देखा, राइट, तो उसे कन्वर्ट करते हैं लीनियर में. बट इन दिस केस हियर tan square x you have to convert in sec square x form because of we have identity formula. ओके, तो इसे sec square में करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. वी नो दैट sec square x इज इक्वल टू 1 sec square x माइनस 1 इज इक्वल टू tan square x, और 1 प्लस tan square x इज इक्वल टू sec square x. तो यहाँ से हमें tan square मिल जाता है. नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ tan square x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ tan square x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x माइनस 1. नाउ टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन, दैट्स इट, दैट इज tan x माइनस x प्लस c. कितना ईजी है. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है. जब आप फॉर्मूले याद कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन के साथ याद करना है. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स, इसी क्या लिखेंगे हम? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. ओके, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाता है आपको बाय टेकिंग सेपरेट इंटीग्रेशन. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
into cos square x dx. Okay, sin square x cos square x dx. Now it is, you have to observe this, here it is u upon v form, integration of numerator and denominator form, but there is no formula. इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन v ऐसा फॉर्मूला नहीं है. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, अभी ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यू हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला. सो बाय यूजिंग cos 2x फॉर्मूला, व्हाट इज cos 2x? सो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. देर आर 4 रिजल्ट्स, cos 2x के 4 रिजल्ट्स है. प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos है. ओके, एंड प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan also is there, और cos एंड sin. तो यहाँ पर यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे, साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम cos 2x का ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. ओके, सो इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x. नाउ टेकिंग स्प्लिट दिस, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, नाउ हियर सी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, दैट इज नथिंग बट cos square get cancel. Here similar factor sin square get cancel. What is remaining factor here? Integration of 1 upon sin square x. What is 1 upon sin square x? Integration of cosec square x. And here 1 upon cos square x, that is sec square x, and both are standard form. So it become integration of cosec square x minus integration of sec square x. What is integration of cosec square x? Minus cot x minus sin, keep as it is. What is integration of sec square x? Tan x plus c. That's it. See, it's very simple form. In 2 steps you will get final answer. Okay, but see, you can observe the structure. Structure is more complicated, but you have to remember the standard formulas of trigonometric function. There are 10 formulas. 6 तो ऐसे आते, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, 2 स्क्वायर में सेक स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर, एंड 2 प्रोडक्ट में, दैट्स इट. इस तरीके से आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आपको बराबर आइडिया आएगी. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे हम बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो बेसिक फार्मूला से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है. ओके, चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. सी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस 29. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है करके हम डायरेक्ट इसे पूरा स्लाइड ये कर दिया आपको. सी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स. वट इज 1 माइनस कॉस 2x? 2 साइन स्क्वेयर एक्स. माइनस अगर होगा तो साइन स्क्वेयर, अगर प्लस होगा तो कॉस स्क्वेयर. ये इसके पहले डिफ्रेंशिएशन में सभी फॉर्मूले परफेक्ट किए हमने. तो अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वेयर एक्स, that is root 2 into under root of sin square x is nothing but sin x. So see this root 2 you have to write outside the integration operator, integration of sin x dx. What is integration of sin x? Minus cos x. So the final answer is minus root 2 into cos x plus c. That's it. ओके, एकदम आसान टाइप है इसमें. अगर इसमें अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं. सी इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इस तरीके से ले सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. Sometime in integration of under root of 1 plus cos 9x, 1 plus cos 9x, I want to show you, cos whatever may be the angle, but that should be, what is 1 minus 1 plus cos 9x? That is 2 cos square 9x by 2. That is again linear angle. Okay, तो यहाँ पर हम कोई भी एंगल ले सकते. You can take any angle here. Okay, any angle, but that should be linear, either positive or negative form. Okay, minus or plus form, anything, right? हाँ, अगर साइन अगर आ गया, सी हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं. अगर साइन आ गया तो देखो कि कितना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 30. इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स. देर इज नो फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है साइन में, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. ओके, तो डायरेक्ट इसमें आ जाएगा. हियर वी कॉल आइडेंटिटी. ओके, यहाँ पे हम आइडेंटिटी कॉल करेंगे. व्हाट इज आइडेंटिटी? यू नो, 1 इज नथिंग बट साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स. अगेन हियर यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हियर. दैट इज साइन 2x इज नथिंग बट 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. एंड सी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस स्ट्रक्चर. दिस इज स्क्वेयर ऑफ one term, suppose it is a, means square of first term. This is also square of a square. Suppose this is b square
plus b square plus 2 times a into b form, and that is nothing but a plus b the whole square form, a plus b the whole square form. So it become integration of under root of sin x plus cos x the whole square. Under root of whole square means under root remove हो जाएगा, it become integration of sin x plus cos x, and by taking separate integration you will get integration of sin x plus integration of cos x, and that is nothing but minus cos x plus sin x. That's it. This is the final answer. Okay. Now same type of questions for practice. Question number 31. Integration of under root of 1 minus sin 2x, integration of under root of 1 plus sin x, integration of under root of 1 minus sin x here, or 1 minus cos x, under root of 1 minus cos x. Okay. For this you have to apply direct formula here, that is 2 sin square x by 2, but in this case means here and for this and this you have to call identity. Okay, you have to call identity. So you will get standard form. Now question number 35. Integration of tan x upon sec x plus tan x. Solution. This is also very simple. You have to observe this. It is u upon v form, but there is no u upon v formula in integration. देखो आपको जितनी भी 46 फॉर्मूले हमने दिए प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें इंटीग्रेशन ऑफ u अपॉन v नहीं है, और आपको सब समझा के दिए. ओके, तो यहाँ पर फंडामेंटल रूल u अपॉन v नहीं है. ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. tan x को लिखेंगे हम sec x प्लस tan x फॉर्म, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व हियर. देखो यहाँ इंटीग्रेशन में सभी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है करके बहुत मुझे इजी लगता है चैप्टर. तो कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं दे सकते हम. सपोज हमने मान लो यहाँ पे अगर सपोज साइन एक्स कर दिया. ओके, ये टैन एक्स की जगह पे साइन एक्स कर दिया, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. मे बी इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा. सपोज मान लो ये टैन एक्स के बजाय कोई भी कॉस एक्स दे दिया, तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. तो सभी यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं ये इंटीग्रेबल होना चाहिए. दैट शुड बी इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल मीन्स इसका हम इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकेंगे. तो सभी एडजस्टमेंट के रहते हैं. अभी देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर फॉर्म दिया है, डिनोमिनेटर जो फंक्शन दिया है सेक एक्स प्लस टैन एक्स. ओके, अगर इसे हमने अगर सेक एक्स माइनस टैन एक्स ने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टैन एक्स. देन बाय यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड व्हाट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स? इट बिकम 1. तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एंड न्यूमरेटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन एकदम एडजस्टेबल यानी कि इंटीग्रेबल फॉर्म देते हैं. डेरिवेटिव में कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम, बिकॉज ऑफ वी हैव u अपॉन v ऑल्सो. डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v है. डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू n फॉर्मूला भी है. ओके, कोई भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं. लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी चेंज कर दिए, मान लो इसकी जगह हमने अगर cot x लिख दिया तो भी सॉल्व नहीं होगा. ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते हम, तो बहुत आसान हो गया. फिर तो हम कभी भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो यू हैव टू अप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय sec x minus tan x here. See here is equal to integration of tan x upon sec x plus tan x into sec x minus tan x upon sec x minus tan x, and that is nothing but integration of tan x into bracket sec x minus tan x upon sec square x minus tan square x, and that is nothing but 1 here. So you have to open the numerator function, numerator bracket, you will get integration of tan x into sec x minus integration of tan square x dx. Now taking separate integration because of दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. इसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे आप तो आपको पहले बताया था, देखो प्रोडक्ट में दो ही है, टैन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स इंटू सेक एक्स और सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वेयर एक्स इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्क्वेयर में कौन सा है, सेक स्क्वेयर है. इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर है, तो इसे हम इजीली कर सकते हैं सेक स्क्वेयर में. सो इट बिकम taking separate integration of tan x into sec x minus integration of tan square x. तो tan square को अभी सिंप्लीफाई करना है. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x? दैट इज वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, दैट इज sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x minus integration of tan square x. What is tan square x? Sec square x minus 1. Now taking separate integration here. Now see here,
minus is outside here, so it becomes minus sec square x minus minus plus 1 dx. Now what is integration of sec x tan x? That is sec x minus tan x, and integration of 1 dx is x. The final answer is sec x minus tan x plus c. That's it. Okay, it's very simple. So you have to remember all standard formulas of integration, means indefinite integration. तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है ताकि हम स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर सके। मीन्स ईच एंड एवरी सम यू हैव टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ओके, स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो गए। तो स्टैंडर्ड फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूले आना चाहिए। ओके, सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 सेक इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन, प्रीवियस में टैन था, यहाँ पे सेक एक्स ले लिया, सेम टाइप का है। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स, यहाँ पे माइनस होगा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो सिमिलरली कोसेक एक्स, तो यहाँ पर देखिए आप द इंटर रिलेशन बिटवीन सेक एक्स एंड टैन एक्स में आएगा और कोसेक एंड कॉट एक्स में आएगा। देयर इज नो सम इन साइन एंड कॉस फॉर्म, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से अगर लेंगे तो इज नॉट वन। तो आइडेंटिटी साइन एंड कॉस में क्या है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बिकम वन, और यहाँ पे माइनस में आता है। तो करके इतनी पॉसिबिलिटी ये सब में है, ये टाइप में है। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ इसे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ये आपको जो अगर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है। एक दो क्वेश्चन अगर आपने परफेक्ट कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, या एंगल भी चेंज कर सकते हैं आप। इंस्टेड ऑफ tan x इट बिकम tan 2x, ओके, tan 3x, तो लीनियर एंगल आ जाएगा।